Sorry, students. Okay, so students, ये जो है center of mass is in motion, and this center of mass is changing its position. Students, center of mass changing its position with respect to time. So what is the rate of change of position of center of mass with respect to time? We called as velocity of center of mass. क्या ये clear हुआ? Students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. अगर ये जो velocity of center of mass हो गया, तो now can I rewrite the expression? क्या मैं ये expression को वापस लिख सकता हूँ? बोले हाँ sir, you can write down. So now what exactly my expression will be? So now my expression will be that is mass into velocity of center of mass can be written in O as what? Instead of m1, am I differentiating Ri by dt? I'll write on m1 v1. Okay, because this becomes algebraic sum of mi vi, where I equal to 1 to I equal to n. So can I know this is m1 v1 plus m2 v2 plus goes on mn vn upon what? m1 plus m2 plus goes on, sorry. Only this much for the numerator part of it. Students, listen carefully. Algebraic sum of mi differentiating the position vector of each particle with respect to time. ये क्या बताता है students? ये बताता है velocity of each particle, ith particle, vi. Students समझ में आ रहा है? तो ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है. Now since it's m into velocity of center of mass, students, so what exactly the formula for velocity of center of mass? So the velocity of center of mass for such a rigid body will be equal to what? It's m1 v1 plus m2 v2 plus goes on plus mn vn, the whole divided by capital M, which can be written as m1 plus m2 plus goes on till mn. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान से समझना. जब भी प्रॉब्लम्स करोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हें क्या करना है? m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2 if I happen to go for two different particles. Are you getting it? तो ये उसका सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ गया. यानी मैंने किया क्या है, मैंने पोजीशन वेक्टर लिया है. स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर का मैंने सेंटर, कोई रिजिड बॉडी लिया, उसका सेंटर ऑफ मास मैंने ढूंढा है, उसी सेंटर ऑफ मास को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे वेलोसिटी मिल गया. अभी मैं क्या करूंगा? अगर हम लोग को स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन हो भैया, अगर तुम देखोगे तो ये एक्सप्रेशन देखो, m into velocity of center of mass. नाउ सपोज अगर मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टूडेंट्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैन यू टेल मी व्हाट आंसर आई एम गोइंग टू गेट इट? Acceleration of center of mass. Absolutely correct. I'm going to get acceleration of center of mass. So can I get the relation for this? We'll say yes, sir. The answer देखना students. Mass into differentiating velocity of center of mass with respect to time. तो ये भी क्या होगा? Students, differentiating v1 with respect to t1, v2 with t2, which can I say this becomes entirely what? So it will be algebraic sum of mi differentiating velocity of ith particle. Students, differentiating velocity of ith particle with respect to what? With respect to time, where I equal to first to I equal to n. What does this be considered as? It's acceleration of center of mass, students. Acceleration of center of mass. So can I say that is equal to, ये क्या होगा? ये होगा acceleration of each particle I'll consider. So can I say this is m1 a1 plus m2 a2, it goes on plus mn an upon capital M नीचे आ जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ? Acceleration of center of mass. Students, clear हुआ? Yes. Capital M. Yes. This is rate of change of velocity. And students, the formulas are very simple. अगर मुझे RCM चाहिए तो what is the formula? m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. If I want the velocity of center of mass, m1 v1 plus m2 v2 upon m1 plus m2. If I want acceleration of center of mass, m1 a1 plus m2 a2 for two bodies upon m1 plus m2. Now अगर मुझे force चाहिए तो what exactly? So this is force into rate of change of velocity. What is rate of change of velocity, students? Mass into change in velocity we consider is what? Momentum. अगर suppose मुझे momentum चाहिए तो इसी को can I write on this in terms of momentum? Can I say this entirely
mass into velocity, can I call this as simply momentum? Yes. So what is a center of mass for the momentum of the rigid body will be? Then what exactly? Sir, it will be simply P1 plus P2 plus goes on plus Pn. तो स्टूडेंट्स ये हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. What is mass into rate of change of velocity is called? Mass into rate of change of velocity we consider is. So mass into rate of change of velocity is called acceleration, and mass into acceleration is called as what? Force. तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो कहना से ये बन गया मेरा फोर्स COM. Now students, can I say this is algebraic sum of mi, rate of change of velocity and acceleration of each particle? So can I say this can be written as force of the first particle? Now students, agreed? Yes. Plus force of second particle, it goes on plus force of nth particle, which can be written as algebraic sum of Fi I equal to 1 to I equal to n, and that is the center of mass of force. Are these formulas clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So please students, in the last lecture, I told you about how to look at the position. Position of center of mass, students, we went for XUM, we went for YCU, we can go for ZCUM. Then students, to locate the position of center of mass, students, by the formula method of area. So we went in that case, removing area we can consider, or removing mass part of it. We went in that case also, A1 x1 minus A2 x2 upon A1 minus A2. Yeah, M1 x1 minus M1 x2 upon M2 x2 upon M1 minus M2 with respect to mass. Now we are trying to go for looking at the positional center of mass. If I try to differentiate with respect to time, I can get velocity of center of mass. Differentiating velocity of center of mass with respect to time, I'm going to get acceleration of center of mass. Agreed. Multiplying mass into acceleration will give me force. Multiplying mass into velocity we consider is giving me momentum. So students, velocity of center of mass, acceleration of center of mass, momentum of the center of mass never changes. It remains the same whenever a body is set into motion. वो कभी भी position change नहीं करता. Are you clear with this part, students? Yes. Okay, can I erase this, students? Yes, sir. क्या मैं इसको- Yes, Can I sir. erase it? Okay. Now let us go for certain problems based. Yeah, follow. Sir, last time also the sums we did were about a regular lamina. So can we use that area formula for irregular lamina also? Yeah, you can use it, but that depends on to what kind of area has been removed. That part should be given to you. Well, see, when I speak about for irregular lamina, in that case, we should know the area part of it. If the area is very well defined in that, then certainly we can consider. Otherwise, for regular bodies, one can simply go for area also, can go for mass also. Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ, students? Yes, sir. Okay.
Okay, students, so let me give you certain questions, students. Listen carefully. Okay. The first question is, students, so it's given to you that is a square lamina of side 4 centimeter and uniform thickness. Square lamina. Did I do this? Overlapping of mass? Yes, sir. Yes. Yes. Overlapping of mass मैंने किया है, students? हाँ sir. Sir. Okay, fine. Then the next one, students. If in case if I happen to give you students, a square lamina is given to you, students. Okay, a square lamina of uniform mass. Okay. Side √2 units is given to you. Okay. As shown. So now when you look into the square lamina, students, this is a square lamina I'll consider. Okay. Now this is A, B, C, and D, students. Okay. Now, students, what exactly I have done it is I've tried to remove a part. Okay. Now the shaded part is removed. This part of the lamina has been removed. Okay. This is a cut part of lamina is removed. Agreed. Side is given to you as √2 units, students. My question to you is, students, find center of mass of remaining lamina. Is the question clear with all of you? Yes. My students? Yes sir. Where lamina of uniform mass side √2 units is given to you as shown. Okay. Cut part of lamina is removed. Find the center of mass of the remaining lamina. If you look over here, students, these 2 points, these are congruent sides. Okay, you can consider this part. You can go for congruent sides, doesn't matter. But the side of the square lamina is √2 units. Get me the answer for this.
Yes, anyone? Find out the center of mass of the remaining lamina or the new position of the center of mass due to the cut part when removed. Shall I solve it for you all, students? Sir, 1 minute. Students, तुम्हारा कल मेजर टेस्ट है ना? Yes, sir. Yes, और sir. सर्कुलर मोशन है? Sunday को है, sir. सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. तो क्या करना है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं मेरे साथ में? We continue with this only. हाँ सर, थोड़ा solution तो Yes, sir. No, all of you should decide. Then only. Otherwise, it's not like that. नहीं तो some students will say, sir, he didn't continue with the portion. He did only circular motion further ahead. Sorry, he did only circular motion. He didn't do the chapter system of particles. It will be like that. I don't want that thing to happen. It should be all united to say it. If it's majority says it, then only. Otherwise, of course, we are doing problems, but we're continuing with the same thing. ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो इसके साथ मैं और एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ. ओके, shift in center of mass due to removed part. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Thus, I need to find out the shift in the center of mass. Initial center of mass कहाँ पे है? Final center of mass कहाँ पे है? So I want to find out distance between center of mass final minus center of mass initial. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन? स्टूडेंट्स क्या सेकंड पार्ट क्लियर हुआ? Shift in center of mass due to removed part. That means I want distance between the center of mass in the final case and center of mass in the initial case. Agreed? Students, is it clear? Yes. Okay, chalo. Now let me solve it for you all. Solve करो. Students, यहाँ पे देखो, please pay attention. Everyone listen carefully. Students, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो side root 2 है. तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हारा calculations हो जाता है students. तो अगर मैं बात करूँ in terms of area of the entire part, students, are you getting it? If in case if I happen to go for the area of the entire part, we consider, and if I happen to go with respect to mass, so what should I go for? Listen carefully, students. तो सबसे पहले मैं लूंगा sigma. ध्यान से देखना students, sigma. What does sigma stands for? So sigma stands for mass per unit area. Agreed? Mass per unit area. Can I say this mass per unit area is also equal to the mass of the cut part upon area of the cut part? क्या ये clear हुआ? Ratio of this remains constant. हाँ या ना? Yes, sir. ये is this part clear with all of you? Did I say that the mass is uniformly distributed? Students? If I say that the mass is uniformly distributed, then the total mass for the total area can be divided into 4 equal parts, so the ratio remains constant.
क्या ये समझ में आया सबको? Students, is it clear? All of you all. Yes, sir. Yes, sir. Yana, is it clear? I have to now ask individually. Sparsh, Yana, Sparsh, Yes, Kathy. sir. Yes, sir. Okay, Yes, Tuan, what sir. about you? South? South, Yes, are you sir. there? समझ में आ रहा है? साउथ बता क्या बोला मैंने? साउथ Yes, sir. तो क्या बोला मैंने? Sir, you said that the mass is uniformly distributed. So when we divide it into equal parts, they will have the same ratio. हाँ, the ratio will remain same. यानी सपोज अगर ये 10 किलोग्राम का मास है, पूरा 10 किलोग्राम है और एरिया उसका 10 मीटर स्क्वायर है, ध्यान से सुनना। तो 10/10 मुझे आंसर 1 मिलता है पूरे के लिए। अगर मैं ये पार्ट भी लूंगा ना तो उसका मास और उसका एरिया का भी रेशियो मिलेगा तो मुझे आंसर 1 ही मिलेगा। Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Now when I look over here, therefore, can I say sigma? Let M be M1 for the entire part of the lamina. What is the area of this? So area will be side square for the first part. You know? That is equal to, let this I consider to be as M2. M dash be M2 the cut part. What is the corresponding area of that? मतलब सर ये पूरा √2 है, ध्यान से देखना, ये पूरा √2 है, तो ये कितना होगा सर? ये होगा √2/2. Agreed? This much, half of it. What is the area of this? Side square. क्या ये clear हुआ students? Is this clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Can I get the formula for M1 then? Can I get the formula for M1? Since sir M1 will be equal to what? It will be sigma √2 the whole square will be into 2. What is M2? What is M2? Sir M2 will be, अगर मैं यहाँ पे multiply करूँगा तो क्या हो जाएगा? Sir it will be sigma √2 the whole square will be into 2/4. है ना? ये देखो ये multiply हो जाएगा. What is √2 the whole square will be 2. What is 2 square is 4. So can I say M2 will be equal to sigma/2? क्या ये clear हुआ? Yes. Agreed? Mass of complete lamina. Students, mass of complete square lamina. ये क्या है? Mass of cut square lamina. क्या ये clear हुआ? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, जब भी मैंने पूरा लिया था तो अगर मैं ये लेता हूँ स्टूडेंट्स, if in case if I happen to go for the axis and if I give you this as my lamina, it was initial in this case. Please students, everybody listen carefully. This was √2. Can you tell me where exactly my center of mass in the first case was? So center of mass was over here. Are you getting it? यानी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये ओरिजिन नहीं ले रहा हूँ. To make my calculations easier, please listen carefully how to make your calculations easier. To make my calculations easier, I will not take this as my x-axis and y-axis. नहीं, मेरा calculation बढ़ेगा यहाँ पे. तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. ये जो पूरा लैमिना था साइड 2 था, तो मैंने क्या किया है, ये मैंने वर्टिकल y-axis ले लिया, ये मैंने हॉरिजॉन्टल x-axis ले लिया, और ये पूरे मास m1 के लिए my coordinates x1 y1 will be 0,0. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. 0,0 ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? एवरीवन स्टूडेंट्स गेटिंग इट? ये मेरा सेंटर ऑफ मास है पूरे स्ट्रक्चर के लिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0. बट नाउ व्हाट अबाउट द कट पार्ट? अगर मैं कट पार्ट को मैं सेपरेटली दिखा दूं स्टूडेंट्स, दिस इज माय कट पार्ट. What is the side of this cut part? The side of the cut part is what? √2/2. Are you getting it? Students, are you getting it? What exactly the cut part I'm getting it? It's √2/2. Is this clear? Yes. So now can you tell me? ये होगा √2/2, तो इसके coordinates क्या होंगे? What exactly the coordinates of this? What exactly its x coordinate and what exactly its y coordinate will be? Students? So can I say it's का half होगा? √2/4.
Root 2 by 4. Hi, Anna. Yes, sir. Agreed. So now can I say for the cut part, if I happen to consider, so what exactly my center of mass I can consider will be? So I've got x1 by 1, I've got it. Now if in case if I happen to consider x2, y2, I consider in this case. Agreed. So वो क्या हो जाएगा? I'll get it in terms of what? I'll get it in terms of what? Root 2 by 4, comma, root 2 by 4. This is for the cut part. क्या ये clear हुआ सबको? Sir, can you explain this one for the second mass? Since the cut part. Second mark मैंने ये कट पार्ट निकाल दिया ना. What exactly side I'm concerned with is root 2 by root 2 by 2. Agreed. ये पार्ट कितना है? root 2 by 2 है. तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा. Agreed. Yes, sir. अभी सपोज मैंने इसको यहाँ पे ओरिजिन ले लिया है ना. मैंने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया था ना. देखना ओरिजिन Yes. यहाँ पे ले लिया था मैंने. आया ना. Yes. तो what exactly its y coordinate and what exactly its x coordinate will be? इसका आधा. Okay. Agreed. Agreed. That's how put this. Now, students, can you find out the center of mass when the part has been removed? So what's the formula? सर हम ओरिजिन ये बी पॉइंट पे नहीं ले सकते? तुम कहाँ पे? हाँ ले सकते ना. क्यों नहीं? क्यों नहीं? लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा माय डियर. तुमने नहीं देखो एक तो 0 0 ले लिया. आई गेट इट. फिर इसका तुम ले सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं. लो तुम्हें आंसर मिलेगा. समझ में आ रूट रहा है? 2 by 2 आएगा फिर मतलब सेंटर ऑफ मास. You can do it. You can do it. Try to get your answer. Try to get your answer. और कट पार्ट के हिसाब से भी तुम ले सकते हो. You can go for that also. Doesn't matter. सर इन दिस Agreed. क्वेश्चन हमने मास यूज किया, इससे हम एरिया यूज कर सकते हैं? इसका एरिया का फॉर्मूला. हाँ तो I've gone एरिया तो लिया ना. It's सिग्मा इज कंसीडर्स व्हाट? इट्स मास पर यूनिट एरिया में लिया है मैंने. वही तो लिया. मास पर यूनिट एरिया के हिसाब से ले रहा हूँ मैं. नहीं, आपने जो एरिया का फॉर्मूला दिया था लास्ट. हाँ हाँ मींस यूनिट से a1 x1 minus a2 x2 हाँ रिमूविंग पार्ट ऑफ इट. हाँ लेकिन एरिया को तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना. देन इन टर्म्स ऑफ मास यू कैन सब्स्टिट्यूट इट. तो अगर मैं एरिया के हिसाब से लिखूंगा तो इट बी m upon सिग्मा. या तुम एरिया ले लो पूरा साइड स्क्वायर. एग्रीड. यस. यस सर. नाउ कैन आई फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम. यानी अगर ये पार्ट निकल गया तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. स्टूडेंट्स ये पार्ट मैंने निकाल दिया. तो अभी सेंटर ऑफ मास क्या होगा? पहले ये वाला था. ये फर्स्ट पोजीशन था. स्टूडेंट्स दिस इज द इनिशियल पोजीशन. Now can you find out the new position of the center of mass? Can you get an answer? So can you find out XUM and YCUM, students? What's the formula? XUM का formula क्या होगा students? M1 x1 minus M2 x2 upon M1 minus M2. Can you get an answer for this, everyone? This is M1 y1 minus M2 y2 upon M1 minus M2. क्या ये clear हुआ students? Students, is it clear? यस. Yes. Can you find out the two coordinates, students? XUM. चलो find out करके get me the answer. XCM और YCM क्या मिल रहा है? और दोनों का वैल्यू सेम ही होगा. तो देखो ना M1 दोनों में सेम है. What is X1 over here? Sir, X1 is 0. What is Y1 is also here 0. What is M2? M2 is sigma by 2. What is X2? root 2 by 4. What is Y2 is also root 2 by 4. यानी जो वैल्यू इसकी होगी इसकी भी वही वैल्यू होगी. सेम ही वैल्यू होगी. कोऑर्डिनेट सेम आएंगे. What is your answer, students? Can you give me the coordinates, students? Anyone? 0.8 I cap and 0.8 J cap. I don't want in decibels. Can you give me in ratio? How do you get 0.8? Answer will be in minus. देखो ना ये 0 हो जाएगा ना. ये तो माइनस ही रहेगा. M2 कितना है? सिग्मा by 2. X2 is how much? root 2 by 4. तो मेरा आंसर क्या होगा?
This will be 8 upon m1 minus m2. 2 minus half, 3 by 2. Students, are you getting it? Minus root 2 by 12. Students? ये 0 है students. What is m2 sigma upon 2? What is x2 root 2 upon 4? So it's sigma root 2 upon 2 हो जाएगा करके. Sorry, sigma upon 8 हो जाएगा. ये कितना है? ये कितना है? This is 2 sigma minus sigma by 2. 2 में से आधा निकाला तो कितना बचेगा? 1.5, 3 by 2. That 3 will go in the numerator. In that case, I can consider. Sorry, 3 will be in the denominator, we consider. And the other part will go in the numerator, 3 by 2. You will get minus root 2 by 12. और ये भी कितना मिलेगा तुम्हें? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Please, are you all getting it? And please, students, logically सोचो. Everybody ध्यान से सुनना, students. जब ये चारों ब्लॉक थे तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? सर आपने इसको y एक्सिस लिया था, ये x एक्सिस लिया है, तो सेंटर ऑफ मास 0,0 था. अभी मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये मास को निकाल दिया तो कहना है ये दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा. अभी इन दोनों के बीच में अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं तो वेरी एक्जैक्टली माय पॉइंट विल बी, where is my point will be? Will it, for this graph, will it be in the first quadrant? Will it be in the second quadrant? Will be the center of mass in the third quadrant? Or will it be in the fourth quadrant? The answer will be third quadrant. दोनों नेगेटिव में ही आएगा. यानी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास somewhere over here होगा students. This is a new position of center of mass. This is the original position of center of mass. Second question में क्या पूछा है? Shift. मैंने ये distance पूछा है. क्या पूछा मैंने? Distance. So go for distance formula. Students, do you know what's a distance formula? Learned it in class 10th. Students? This is, let me take this as x2 and I'll take this as x1. x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square within root sign. That is the distance travel or the distance in the shift of center of mass. क्या ये clear हुआ सबको? Sir, I had taken the origin at B, so I'm not getting that same answer. तुमने origin से लिया है कहाँ पे? At point B लिया है. Yes, sir. हाँ, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास तो पहले केस में कितना होगा? √2 by 2, √2 by 2 होगा. हाँ सर. और ये मैटर के लिए क्या होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ मास? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा? सर सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज चेंज हो जाएगी अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो? ऑफ कोर्स. अभी तुमने कट पार्ट को निकाल दिया ना, कट पार्ट निकाल दिया तो हेवीनेस यहाँ पे आ गया ना, ये पार्ट हेवी हो गया ना, तो पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, ओ शिफ्ट होके वहां पे चला जाएगा ना, एंड इट विल गो इन द थर्ड क्वाड्रेंट. मैं पूछ रही हूँ अगर हमने बी को ओरिजिन लिया तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या? अगर तुमने बी को लिया है ओरिजिन, लेकिन वो स्क्वायर लामिना का सेंटर ऑफ मास वही होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे ना. मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे? 0,0 टू गेट इट मोर इजियर. लेकिन नाउ सुहानी सेरेड का अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा 0,0 की जगह पे क्या होगा? √2,2 होगा. √2,2 एग्रीड. लेकिन कट पार्ट के लिए क्या होगा? कट पार्ट के लिए क्या होगा? ये होगा √2/2/4, यानी √2/4 होगा ना. √2/4 plus √2/2, 1/4 plus half, that is 3/4. 3/4 √2. Yes. That will be x2 y2. Agreed? Suhani, is it clear? तो सर वो कट पार्ट का जो वो होगा कोऑर्डिनेट्स होगा सेंटर ऑफ मास का,
तो वो होगा 3√2/2. नहीं 3√2/4. हाँ, ये तूने लिया Sir, था? I'm getting answer 3 root 2 by 4 in negative. क्या इसके लिए ये कैलकुलेशन? Yes, sir. Minus 3 root 2 by 4. Okay, let X me let me solve this. Now I'm going to erase this part. Okay, only this part I'm erasing. Okay, friends, let us solve for this part. Okay. So now, if in case if I happen to go for XUM, so what exactly XUM will be equal to M1 X1? We consider how much is M1 will be 2 sigma. M1 X1. What is X1? I'll consider will be X1 is 0 minus M2. What is M2? I'll consider will be sigma by 2 into what exactly it is X2. So what exactly X2 I'll consider will be root 2 by 4 upon M1 minus M2, 2 sigma minus sigma by 2. तो कहने से ये तो 0 होगा, ये minus sigma root 2 by 8. ये क्या होगा? 2 minus half यानी कितना होगा? 3 by 2. So divided by 3 by 2 sigma. तो कहने से minus sigma root 2 by 8 into 2 by 3 sigma. Sigma and sigma will get cancelled. 2 4s are, what's my answer? Minus root 2 by 12. That's your XCO. यही आएगा. So ये division Sir, है. and what if we use area formula? Pardon? What if we use area formula? What do we use? Area formula. So A1, if in case then in that case the removed part of the area has to be taken into account. A2 तुम्हारा आएगा and A2 is a removed part of it. उसके corresponding coordinates. बट अगर एरिया फॉर्मूला लेंगे तो क्या एक्सियम सेम होगा कि डिफरेंट हो जाएगा? XCM and Y of course will change accordingly ना तुम्हारा, लेकिन वो कट पार्ट का तुम अगर यहाँ पे देखो, तुम्हारा पहले तुमने ओरिजिन कहाँ पे लिया उसको तुम देखो. अगर तुमने यहाँ पे लिया तो तुम्हारा x1 y1 x2 y2 दोनों किस में चेंज होगा. भले तुम एरिया लेते हो और एरिया फॉर्मूला लेते हो तो वहां पे तुम्हारा आंसर सेम आएगा, और इन केस इफ आई हैपन टू गो फॉर मास के हिसाब से भी सेम आएगा. लेकिन जब भी तुम मास डिटेक्ट करते हो ना स्टूडेंट्स, व्हेन यू ट्राई टू रिड्यूस योर मास, ट्राई टू गो फॉर मोर प्रिसाइजली विद रिडक्शन ऑफ मास रादर देन गोइंग फॉर एरिया. If you add on or if you go for, suppose अगर मैंने सारे blocks दिए and then tell you to find out the not given mass at all, मैंने जैसे दिया uniform mass, then I should go for mass part of it rather than going for area part of it, because that becomes much more easier to crack it. Suhani, is it clear? Yes, sir. अभी देखो Sir. तुम्हें, हाँ बोलो. Sir, can you check once that what mistake I have made because I'm not understanding. अरे तुम्हें ये मिला कि नहीं मिला? I'll 6 switch root 2 on by my 8 मिला? video. ये 6 root 2 by 8 हाँ, मिला sir. तुम्हें? हाँ, ये मिला 6 root 2 by 8 numerator. Sir, that is not 6, I guess. It is Sorry, this. sigma root 2 by 8. Sorry, sigma root 2 by 8 मिला है numerator. Yes, sir. Denominator तुम्हें मिलेगा 3 sigma by 2. Yes, sir. तो ये डिवीजन है ना, उसको मल्टीप्लिकेशन करना तो 2 ऊपर चला आएगा, 3 सिग्मा नीचे आएगा. Okay, got it. Is that clear? Okay, sir. Got it. So students, you have got the center of mass of the two. Now students, अगर मैं can I erase this part? क्या ये part को erase करो students? Yes. Students, can I erase this part, lower part? Students, can I erase this part, lower part? Yes, sir. Yes, sir. Now see, you have got XUM students, you have got YCOM students.
Your YCOM is also same, minus root 2 by 12. पहले तुम्हारा x1 y1 क्या था? Center of mass for the complete lamina. For the complete lamina was 0,0. But now because of the cut part, now what has happened? What has happened? The center of mass is now shifted. It has shifted. ये मेरा axis था, ये मेरा first quadrant, ये मेरा second quadrant, ये मेरा third quadrant, ये मेरा fourth quadrant. अभी जो shift होके गया है तो किसकी तरफ गया है? सर ये नेगेटिव में चला गया है ना? तो ये पहले कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1. अभी मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, लेट मी अज्यूम दिस इज माय कोऑर्डिनेट एंड आई टेक दिस एज x2 y2. So this I'll take it as x2 and this I'll take it as y2. My question was, मैंने और एक क्वेश्चन डाल दिया स्टूडेंट्स, what exactly the shift in the center of mass? यानी मैंने ये पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है. तो ये दो तरीके से हो सकता है स्टूडेंट. जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा वो बता सकेगा. डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, सपोज इफ आई टेक दिस एज o and if I take this as d या o and p. So what exactly distance OP will be? What's the formula? Under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ. सॉल्व दिस, तुम्हें आंसर मिलेगा. चलो वो अगर नहीं जमता है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता है, तो तुम देखो ना डायग्राम को. प्लीज एवरीवन लिसन केयरफुली. ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे था, ये 0,0. कैन यू लोकेट ओवर हियर? हाँ सर, यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी. दिस वाज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. Agreed? This is x1, y1. Your x2, y2 after the part was cut was how much? Minus root 2 by 12. Minus root 2 by 12. Can I say it's a right angle isosceles triangle? Students? ये देखो. तो can I say ये 45, 45, 90 triangle हो गया? मैंने ओपी डिस्टेंस पूछा है, ओपी डिस्टेंस पूछा है. एक मेथड मैंने क्या बोला? यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1. अगर वो नहीं जमता है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं जमता है, तो मारो गोली, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैन आई यूज theorem of Pythagoras and get the value of OP? Yeah. Now can I say sin 45 opposite upon hypotenuse and get the answer? स्टूडेंट देखो ना, अगर मैं sin 45 लेता हूँ, आई गेटिंग इट? अगर मैं sin 45 लेता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, थोड़े sin 45 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. मुझे क्या चाहिए था? ओपी चाहिए था ना. व्हाट इज sin of 45? 1 by root 2. So can I say OP क्या होगा? What's my answer? 1 by 6. Solve this also, you'll get 1 by 6. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Yana, is it clear? Yana? Yes, sir. So please, when you're trying to solve these questions, एकदम calmly and coolly try to go for it, and please make a way of approach. अगर तुम्हें uniform mass दिया है, go for mass formula. If they give you the areas distributed uniformly throughout the length we consider or whatever, then you go for area formula in that case. Are you getting it? लेकिन ध्यान से सुना, तुम area ले सकते हो, लेकिन most of the problems we are solving it, we can solve it with respect to mass we can consider. एक ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेट्स कौन से सिलेक्ट करना है. तुम्हारा प्रॉब्लम का लेंथ को इजी बनाने के लिए ट्राई टू गो फॉर द कोऑर्डिनेट्स फॉर 0,0 as the first case where you get center of mass. Then go for the other one. That becomes your problems much more easier. Okay, can I erase this, students? इसको erase कर दो. Yes. Okay. I'm giving you a next question. This will be an easy one for you to crack.
Okay, friends, the next one. Now we have given to you, find the position of center of mass for the given figure. Let's find COM for given figure. Now it's an easy one for one to bracket, students, okay? There are given to you as 2 blocks, students. 3 blocks. Students, all sides are equal. Okay. This is, let us assume this is your first block, students. Okay. You can assume this is your first block. This is your second block. You can consider this as your third block. Now, when I speak about mass per unit area, students, let us say this is simply sigma, this is 2 sigma, and this is 3 sigma given to you. The side of the block, if I happen to consider, students, is given to you as 2A. So students, the question asked is, students, find out the center of mass for the given figure. Is the diagram clear to all of you? Yes. Options, I'll give it to you. Options are, students, it's AI plus AJ, 3 by 2 AI plus 3 by 2 AJ. Option C, 2AI plus 4A by 3J. Option D, 2AI plus 2AJ. So there are given to you 3 blocks, students. The sides are exactly same, students. Okay, the sides of the blocks are same. 2A, 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 2A we consider. And the mass per unit area, students, given to you for the first block is 2 sigma, second block is 3 sigma, and the third block is sigma. Find out the center of mass of this. I haven't removed any part or something. Find out the center of mass for this particular system. क्या बात है, साउथ साउथ, your question clear है? Yes, sir. Okay. Janani, are you getting it, Janani? Aditi? Sir, I'm like Sir, doing it. Okay, but did you understood the previous question, both of you all, Aditi and Janani? Yes, yes, sir. sir. Okay, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, नहीं समझ में आना तो रुकाना है और पूछना है. How do Suhani ask? How do at times Sanjana ask? How exactly Anna puts forward? How exactly Saud asked? Saud ने एकदम simple question भी पूछा था, and I made him understand. अगर तुम नहीं पूछोगे तो you'll be into a loss. I'm telling you very clearly. Studies के time पे don't take it for granted. Parthvi, you are mom. Why don't you Yes, sir, speak? I'm doing it. समझ में आ रहा है पार्थवी? Yes, sir. And what happened to you, Parthvi? Why aren't you speaking much nowadays? Huh, Parthvi? The rest, guys, what about you all? Saul is responding. Om, what about you? Pranshu? Udit? Sparsh? स्पर्श तेरे को समझ में आ रहा है? हाँ सर. अभी इसको बताओ स्पर्श, इसमें तू कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? क्या तू m1 x1 minus m2 x2 upon m1 minus m2 यूज करेगा?
या a1 x1 minus a2 x2 upon a1 minus a2 यूज करेगा? हाँ स्पर्श, सिर्फ फॉर्मूला बता कौन सा यूज करेगा? सेकेंड वन। ओके, मैंने यहाँ पे क्या मास निकाला है स्पर्श, या एरिया निकाला है? एरिया सब्ट्रैक्ट किया है या मास सब्ट्रैक्ट किया है? नहीं ना? नो नो। तो व्हाट द प्रॉब्लम, मैंने ऐसा किया कि 4 ब्लॉक के उसमें से एक ब्लॉक निकाला, ऐसा दिया था मैंने प्रॉब्लम। तो सब्ट्रैक्शन से आएगा ही नहीं, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला गलत है। समझ में यस सर, आया? यस सर। हाँ ये क्लिक होना जरूरी है स्टूडेंट्स, यानी ये देखो, ये अभी इतने सारे स्टूडेंट्स है, उसमें से सिर्फ 4-5 जन को ये क्लिक होगा, और फेयर इनफ है, जनानी को भी क्लिक नहीं होगा। मे बी आदित्य ऑल्सो माइट बी सिंपली वंडरिंग कि अरे यार ये तो सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, और तुरंत तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 ब्लॉक दिए थे, यहाँ पे मास तो कुछ निकाला नहीं हमें। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा सर, यहाँ पे अगर मुझे एक्सीएम और वाईसीएम निकालना है तो हाउ डू आई गो अबाउट विद इट? तो द फॉर्मूला फॉर एक्सीएम क्या होगा? द फॉर्मूला फॉर एक्सीओएम and YCOM will be equal to what? So there are 3 blocks. So it will be M1x1 plus M2x2 plus M3x3 upon M1, M2 and M3. Aya, do you all get it, students? Yes. Yes. Whereas for the next one, what will be? It will be M1y1 plus M2y2 plus M3y3 upon what? M1 plus M2 plus M3. क्या ये clear हुआ? ये formula clear हुआ सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. जनानी क्लियर, Yes, जनानी क्लियर, फॉर्मूला क्लियर जनानी? Yes. पाथवे अभी देखो, अभी Yes, ध्यान sir. से तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया। अभी ट्राई टू ऑब्जर्व द ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, अगर तुम ऑप्शंस में ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारे सी और डी ऑप्शन में सेम है, एक्सीओएम आया ना? हाँ सर। लेकिन तुम वाईसीएम देखो, इज वाईसीएम डिफरेंट इन ऑल? यस। तो वाईसीएम तो सब में डिफरेंट है। तो तुम्हें अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है, मेजर टेस्ट में, तो क्या तुम एक्सीओएम निकाल के आंसर तुम फास्ट लेके आ सकते हो या वाईसीएम को निकालोगे? YCO। YCM. एक्सीओएम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाईसीएम सारे डिफरेंट है। तो ओनली फाइंड आउट वाईसीएम, खत्म हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम एक्सीओएम भी निकाल सकते हो। अभी देखो, तुम्हें वाईसीएम में तुम्हें M1 चाहिए। व्हाट इज सिग्मा? व्हाट इज सिग्मा? मास पर यूनिट एरिया। लेट मी गो फॉर द फर्स्ट ब्लॉक। Students, sigma is mass of the first block upon what exactly the area of the first block? What exactly the area of the first block? Sir, side is 2 है, ध्यान से देखना, इसका side 2 है, ये भी 2 है, तो इसका area क्या होगा? Let me take this as a. How much is sigma? How much sigma for the first one? So the first one is 2 sigma. Students, can I run M1 as 2 sigma A? क्या ये clear हुआ? Yes. Everyone. Mass per unit length for the first block is 2 sigma. Mass per unit area. Area is same, 2 the whole square. अभी मैं area नहीं डालूंगा वहां पे। अभी देखो, सेकंड के लिए क्या होगा? सर सेकंड के लिए mass per unit area is 3 sigma. What is the mass? M2. What is the area of this? Still A only. Therefore, what exactly M2 will be equal to? Sir, it's 3 sigma A. Agreed? Agreed? Yes. Yes, sir. Yes, M3 sir. हो जाएगा। Sigma is equal to mass per unit area. Therefore, what exactly M3? Sigma into A. Can I substitute over here? Why not? Now let us go for the coordinates. If I happen to go for, can you go for the coordinates, friends? चलो find out करते हैं coordinates. ये तुम्हारा first, इसके coordinates क्या होंगे? ये 0,0 है। इसके coordinates क्या होंगे? A, A, comma A, A. So ये x1 y1 will be A, A. ये 2 के coordinates क्या हो जाएंगे? 3A, A. 3A, A. I getting it? This will be 3A, A. और इसके coordinates क्या हो जाएंगे? A, 3A. A, 3A. x3, y3. What exactly it will be? ये होगा A, 3A. क्या ये clear हुआ? Now go for YCM. I'm only finding out YCM. What exactly YCM? M1 is how much? So it's 2 sigma A into Y1. We consider how much is Y1? A plus M2, 3 sigma A into Y2. How much is Y2 going to use? A plus M3 is what? Sigma into A. How much is Y3?
y3 is 3 times a upon m1 plus m2 plus m3, 3 sigma a plus 2 sigma a plus 1, so 3, 4, 5 and 1, 6. Numerator क्या है तुम्हारा? 3 and 3, 6 and 2, 8. 8 sigma capital A small a upon 6 sigma capital A. Sigma will get cancelled, A will get cancelled. 2 4s are, 2 3s are. So what's my answer? 4a by 3. Is it my YCUM? Yes. Which option shows me that? C. Is it clear, students? Yes. क्या बात है, साउंड ने आंसर दिया. Few students have already given. Sneha had given the answer. Yana had given the answer already. Yana was the first one to answer for this. Good, Yana. Okay, Yana is getting a catch on these questions. Saud also. Can I erase the students? क्या मैं इसको erase कर दूँ अभी? Yes. Oh. Now, students, for the next question, students, okay? The next question is, students. Find out the acceleration. Students, find out the acceleration of center of mass of a system. Okay, for two particles. For two particles, M1, M2. एक का मास है 1 किलोग्राम, दूसरे का मास है 2 किलोग्राम, students. Okay, and both these masses are projected from top of a tower. Students, from top of a tower. ये tower है. Okay, from top of a tower they are projected, students. This is the ground. Two particles are being projected from top of a tower simultaneously with same speed. 1 kilogram vertically upwards, 2 kilogram vertically downwards. 1 kilogram vertically upwards and another vertically downwards. Are you getting it? I want acceleration of center of mass of the system. So Sir, both 2 of them. kilo is dropped, right? Yes, it's dropped. It's not thrown, it's dropped. Okay. 1 kilogram vertically upwards. Okay. So the two particles are projected. Students, two particles are projected simultaneously. Look at the words. Projected simultaneously. 1 kilogram vertically upward, 2 kilogram vertically downward. The acceleration of center of mass of the system is. Shall I give you the options? Option A, option B, option C, option D. Minus G by 2, minus G by 3, 0, minus G. Students, क्या question clear है सबको? I repeat, two particles, each of mass 1 kilogram and 2 kilogram, are projected simultaneously from top of a tower, 1 kilogram vertically upward, 2 kilogram vertically downward. Find out the acceleration of center of mass for the system of these two particles. Come on, the most intelligent student will be able to answer. Come on, Aditi, Chandani,
Meera, Om, Parthvi, Pranshu, South, Soumya, Shona, Swati, Tisha, Udit, Sparsh. The question is Sparsh. Sparsh, question क्या मैंने बोला वापस बोल रहा Sparsh, I'm speaking the question once again. Okay, two particles, one of mass 1 kilogram, others of mass 2 kilograms, are projected simultaneously from top of a tower, 1 kilogram vertically upward, 2 kilogram vertically downward. I wanted to find the acceleration of center of mass of the system. Options are given to you: minus g by 2, minus g by 3, 0, and minus g. Aditi is absolutely correct. Come on, anybody else? South, you are absolutely wrong. Sparsh, you are absolutely correct. Sparsh, can you tell me how to solve it? सर तुक्का मारा Hey, तुक्का ऐसे कैसे मारा? ऐसे ही मतलब डाल दिया माइनस जी डाल दिया माइनस जी. क्या बात है. क्योंकि सर doesn't matter on the weight, both the objects will reach. Acceleration, नहीं, acceleration of center of mass का फॉर्मूला भी मैंने क्या आया था? m1a1 plus m2a2 upon m1 plus m2. ये फॉर्मूला है कि नहीं है? Yes sir. Now tell me, first body 1 kilogram किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है? Yes sir. So what is the direction of acceleration? Acceleration is in what direction? Can I say acceleration is directed downwards? Yes sir. Yes or no? हाँ yes sir. And 2 kilogram के लिए लोगे तो उसके लिए अगर drop कर रहा तो where is the direction of acceleration? Second case is also downwards. Yes sir. So दोनों can I say they are vector acting along negative y-axis only? Yes. So now can I substitute the value? How much is m1 known to me? So it's 1 minus g plus 2 minus g upon 1 plus 2. तो ये कितना होगा? Minus 3 g upon 3. What's my answer? Okay sir. Thank ये क्या है तुम्हारा? Acceleration of center of mass in vector form I've given to you, students. In vector form. That means it's always directed downwards. तुम्हारा अगर option में plus g में थे, सारे plus में तो plus g आंसर आता. लेकिन motion downwards ही है. Where is the direction of acceleration of center of mass? Vertically downwards. For both the bodies. Are you getting it? Students, क्या ये clear हुआ? Sanjana, is it clear? Yes, sir. संजना क्यों नहीं आया तुम्हें? संजना, I'm speaking to you. क्यों नहीं आया? Yes, sir. क्या आ गया था? Sir, मैं final answer नहीं आया. Naughty girl. Sorry, sir. Suhani, what about you? Suhani, is it clear? Yana, what about you? Yana, is it clear with you? Yes, sir. Okay. Now please pay attention for the next question, students. Can I erase this? इसको मैं erase कर दूं, students? Sir, 2 minutes. चलो, इसके अंदर मैं और ऐड कर देता हूँ. स्पर्श. स्पर्श. Yes sir. I'm adding one more thing. अगर Okay. suppose मैंने body one को project किया with 200 meter per second upwards, okay? Yeah. Yes sir. And body 2 is dropped down with 60 meters per second. Can you find out the velocity of center of mass? Bolo. Oh, Parthy is raising hand. Yes, Parthy, bolo. What's the formula? M1 V1 plus M2 V2. Okay, M1 V1 plus M2 V2 upon M1 plus M2.
Will you take velocity in vector form over here, students? Hi or na? Yes, sir. Absolutely correct. तुम vector form में ही लोगे. Now can you go for how much is m1 given to you? 1. What is v1? Part 3, what is v1? Is it directed upwards? Yes, sir. So should I go for plus 200 or minus 200? Plus 200. Okay. Plus, how much is m2 given to you? 2. 2. And what exactly the velocity directed downwards? Minus 60. Very good. And denominator में क्या होगा? 1 plus 2. 3. So can you see the answer is 200 minus 120 divided by 3. So what's the answer? 80 by 3 meter per second. Aditya got the answer. Students, क्या ये clear हुआ? स्पर्श अभी clear हुआ? हाँ सर. Direction को ध्यान में रखना. Yana, is it clear, Yana? Yes, sir. Okay. Sanjana, what about you? Yes, sir. Okay. Can I erase? क्या मैं erase कर सकता हूँ इसको? Sir, हाँ बोलो. sir, when the body is dropped down, so in that you told that we can take acceleration positive or negative, but we have to take rest all the quantities also related to that only. So Yeah. if we take acceleration positive g, then My dear सुहानी, अभी मैं क्या करूँ मैं तुम्हारा? सुहानी, मैं क्या करूँ यार? मुझे ये बता सुहानी, एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास मैंने वेक्टर नोटेशन में लिखा है या नहीं लिखा? मुझे ये बता पहले. लिखा है सर. तो तू अभी क्वेरी क्यों कर रही है? ये क्वेश्चन क्यों रेज हो रहा है? अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो तेरा एक्सेलरेशन फ्री फॉल के हिसाब से माइनस जी होगा. ऊपर के लिए भी माइनस जी आएगा, नीचे के लिए भी माइनस जी आना चाहिए. अगर तू काइनेमैटिक्स यूज करते है, स्टूडेंट्स अभी भी ध्यान में रखना. For the last time I'm saying it, I'm not going to say again and again. If we use the formula V is equal to U plus GT, ध्यान से सुनना. If a body is thrown vertically upwards, students, V is positive, U is positive, G is negative for body thrown vertically upwards. But now if I say a body is thrown vertically downward or dropped vertically downward, then there are two approach. A person can take G positive, लेकिन back of the mind तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? Motion downwards. ये मोशन डाउनवर्ड्स का मतलब क्या होगा? भले तुमने जी पॉजिटिव ले लिया, जी को पॉजिटिव लिया, लेकिन ये नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड्स की तरफ है. यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स तुम एक्सेलरेशन की यहाँ पे भी प्लस जी ले सकते थे, यहाँ पे भी प्लस जी लेते, तुम्हारा आंसर प्लस जी में आता. लेकिन जब भी हम काइनेमैटिक्स यूज करते हैं तो मेरा जी अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव लेता हूँ लेकिन मोशन डाउनवर्ड्स है. अभी दूसरी तरीके से सेम इक्वेशन फॉर अ बॉडी मेड टू मूव वर्टिकली डाउनवर्ड. स्टूडेंट्स, अगर मैंने वेलोसिटी डाउनवर्ड्स टेक इट नेगेटिव, u downwards take it negative, then g has to be downwards. तीनों नेगेटिव होने जरूरी है. यहां पे हमने सिर्फ g को पॉजिटिव लिया है, आई गेट इट, क्योंकि बाकी सारे पॉजिटिव है. अगर ये दोनों अगर मैं पॉजिटिव तो इसको बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव. अगर मैं g को नेगेटिव लूं तो ये दोनों भी नेगेटिव होने वाले मेरे. समझ में आ रहा है सुहानी? आर यू गेटिंग इट? हाँ सर. यानी फ्री फॉल के जब भी प्रॉब्लम्स करते हो स्टूडेंट्स, तो टू गेट योर आंसर मोर फास्टर यू कैन टेक इन दिस मैनर, डजंट मेक एनी डिफरेंस. लेकिन अगर तुम्हें करेक्ट अप्रोच जाना है तो इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसको. तो तुम्हारा बी का आंसर तुम्हें क्या मिलेगा? नेगेटिव. अगर तुम बी फाइंड आउट कर रहे हो तो बी को नेगेटिव नहीं लोगे, तुम यू और जी को नेगेटिव, तुम्हारा आंसर बी नेगेटिव में आएगा. अगर तुम्हें यू फाइंड आउट करना है तो वी और जी को नेगेटिव लोगे. समझ में आ रहा है? Because body is made to fall vertically downwards. और यहाँ पे मैंने वेक्टर नोटेशन दे दिया था, तो मैं करेक्ट अप्रोच कैन बी रिटन एज माइनस जी.
ये हुआ वेक्टर फॉर्म में। अगर मैंने मैग्नीट्यूड में पूछा तो सिंपली जी, आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay, can I erase it? Yes. The last question, students, listen carefully. Suppose if I give you a fixed pulley, students, एक मैंने fixed pulley दे दिया है, okay? This is a fixed pulley, and there are two masses which are suspended on either side. Okay, one of the mass is of 2 kilogram. Okay, and the other mass is of 1 kilogram. तो मुझे बताओ students, motion किस तरफ होगा? Students, what is the motion? Can I say M1 is going to go down? Aya na? हाँ sir. And M1 is going to down and M2 is going to go up. The acceleration in both the cases is A. It will go with same acceleration. The tension in both the strings is the same. Now you should find out. मैंने क्या दिया है? A fixed pulley is given to you, and there are two masses suspended on either side through a tackle. The string or the tackle or the rope or the chain is inextensible. Are you getting it? It's inextensible, students, and it's light. यानी उसका mass consider नहीं करना है, and they are inextensible, and neglecting the friction between the moving parts. यानी string inextensible है, massless हम पकड़ेंगे. Same thing we consider, no need to consider friction between the moving parts. Mera question is, students, what is the acceleration of center of mass of both the blocks? Find out acceleration of center of mass of both blocks. Can you get an answer for this? Center of mass, huh? Oh, Aditi is giving the answer. Aditi, कैसे आया बताओ? Sir, first is correct. Yes, absolutely correct, बोलो. Sir, first I found the net acceleration of the pulley, which will be 20 minus 10. That is 10. Yes. And then using the formula M1 A1 plus M2 A2 upon M1 plus M2. M1? Sir, then I use the formula of center of mass, sir, which will be equal to 2 into G by 3 minus 1 into G by 3 upon 3. Sneha, no, my dear. Suhani, you are incorrect. Sneha, you are incorrect. Answer is G by 9. Okay, मुझे बताओ, how do you get it? Aditi, क्या किया तुमने पहले? Acceleration कैसे निकाला? Sir, first I found the like the net acceleration of the pulley. कैसे? So which will be like it's the 20 minus 10, but the force acceleration is force upon mass. So net force is 20 minus 10. Okay, that means the answer सुनना students. To get the acceleration of center of mass, हमारा formula क्या था? Students, force center of mass for the system is equal to mass into acceleration of center of mass. Center of mass.
यानी ये क्या हुआ, ये तुम्हारा नेट फोर्स होगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। तो कहना से यहाँ पे तुम्हारा आएगा फोर्स नेट अपॉन मास। एग्रीड? Yes. What is net force? What is net force? There are two forces acting we consider. So can I say m1g plus m2g in the downward direction? Aya na? All the time? Are these two weights acting in the downward direction? What about the two forces which are acting upwards? Minus, ये आएगा ना मेरा net force upon what is the total mass? ये होगा ना मेरा formula, acceleration of center of mass. Agreed? Aditi? Yes. So I didn't use like this. I just normally solved it like the normal LLM we solve, like the pulley questions. It's Okay. like I solved it like tension means 20. Like I normally find the acceleration which will be 20 minus 10. Okay, तो ये मतलब यानी यानी देखो तुम्हें दो इक्वेशंस मिले होंगे। पहले केस में इक्वेशन क्या मिला होगा, ये तुम्हारा m1g yes, नीचे जा रहा है, 20 minus ये t is तुम्हारा equal to 2 m2g जा है. रहा है। अभी ध्यान से देखो, वेट अ मिनट, फर्स्ट केस में तुम्हें मिलेगा इक्वेशन m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। Yes, sir. सेकंड इक्वेशन में ये बॉडी नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इट्स t माइनस m2g माइनस m2a, ये सेकंड इक्वेशन। Yes, sir. तो यहाँ पे तुमने क्या फाइंड आउट कर दिया है? Sir, acceleration. तो एक्सेलरेशन तुम्हें g/3 मिलेगा। Yes, sir. हाँ, फिर क्या किया तुमने? So then I use this acceleration in the formula of acceleration of center of mass, which will be m1 a1 plus m2 a2 upon m1 plus m2. एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी तुम्हारा सही है। अभी मुझे बताओ, दोनों का एक्सेलरेशन अलग है, सेम है? Same है. सेम है। The acceleration both the cases is same, students. तो ये भी सही है, g/3. Now she is getting the answer. How much is m1? How much is m1? 2 into 2. g/3 plus 1 into g/3 upon 3. तो ये So it कितना will be होगा? minus over here. Which one? Yes, it's directed downwards. Very sorry. Yes. Agreed? I 2g getting it? by 3 will be minus, sir. Yeah, sorry, this part, 2g/3 will be negative in that case. तभी जाके तुम्हारा आंसर किसमें आएगा? g/3 in negative I can consider. Agreed? Yes, sir. Okay. लेकिन अगर तुम लेते हो m1a plus m2a, the acceleration possessed by the body we consider. Students, ये सेकंड केस के लिए जाएगा ना, सेकंड केस के लिए ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो -2g/3. Agreed? Plus g/3 upon 3. What's the answer? 3 minus 2 1. So can I say my answer is g/9? Acceleration of center of mass. Students, what she did is absolutely correct. ये correct approach है. Is this clear? This is the first step and this is the second step. Yes. Sanjana, you want to Sir, say can you something? explain the second part once again? Second part में मैंने क्या, ये तुम्हें दो इक्वेशन सॉल्व करके लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन मिला, ये पता चला? हाँ सर, वो समझ। अभी तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1a1 plus m2a2 upon m1 plus m2. आया Yes. ना? a1 किसका है एक्सेलरेशन? पहले बॉडी का। आया ना? Yes sir. Is this body going upwards or downwards? Down. So will this acceleration will be positive or negative as per the sign conventions, because it's vector? Negative. तो ये तुम्हें माइनस में आएगा। ये Yes. बॉडी किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। Yes sir. And the acceleration of the two blocks is the same. Now सर when I solve आंसर -g/9 आएगा ना? इसका, sorry, -g/9. -g/9. Negative sign, yes, -g/9. Negative sign shows that the motion is downwards. The acceleration of center of mass is downwards. क्या ये क्लियर हुआ? आंसर नेगेटिव आएगा, प्लीज। Jana, you absolutely correct. ये -2g/3 है plus g/3 है, तो -g/3 upon 3 minus g/9. Acceleration of center of mass is g/9 directed downwards.
Sanjana, is it clear now? Yes, sir. सेकेंड अप्रोच मैंने क्या किया मालूम है, तुम ये फॉर्मूला लेके यू कैन गो फॉर नेट फोर्स. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी लोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा. नेट फोर्स इज व्हाट? नेट फोर्स इज total mass in the downward direction, two tensions in the upward direction upon m1 plus m2. इसको जब भी तुम सॉल्व करो ना ओवर हियर आल्सो, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है. या फिर देखो, तुम्हें जब भी a मिल गया, can I put a in any one equation? Can I get tension? Students? Put a in any of the one equations. Can I get tensions? Yes, put tensions over here. You'll get the answer for this also. So this is one approach. This is second approach, but this is the fastest way of doing. Is this clear, students? Students, is it clear? Yes, sir. So we wind up over here, students. In the next lecture, we'll be continuing further. Right, students. Now your next concepts will be going with respect to your momentum, law of conservation of momentum, students. Certain questions related to your rate of change of momentum, exhaust of Newton's third law of motion के हिसाब से जो तुम लोग ने rocket propulsion के बारे में किया था, उसके related कुछ questions होंगे. Are you getting it? So that will be the Yes, part sir. of it. Okay. And kindly do your paper properly. Okay. Read your questions very carefully and try to score maximum. You're all the best. Thank you, sir. Thank you, sir.